All right. So the first thing that अब ionic equations पे हमने कल थोड़ी सी बात की थी. We had a couple of questions. So ionic equation, also called half equation sometimes, basically talks about or summarizes what is oxidized, what is reduced. So for example, I add magnesium to HCl. Now, magnesium is more reactive than hydrogen. So there is hydrogen ion, there's chloride ion, and magnesium is going to displace the hydrogen, and you're going to get magnesium chloride plus hydrogen gas. But what happens at the atomic level? So for that, we have to make the ionic equation. तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम states लगाएंगे. So these are all the states that we have. Aqueous means it is dissolved in water. And now we will make ions. So magnesium over here, इसके कोई ions नहीं है, ये just magnesium solid है, lattice में. But HCl is dissolved, which means that HCl can make ions. When something makes ions, that process is called ionization. Okay? So HCl will dissolve in water and it will give us hydrogen ion and chloride ion. अब जब भी आपने इन चार्जेस को लिखना है ना, तो इसकी आपने कोई फिक्र नहीं करनी कि ये नंबर्स क्या हैं. यहाँ पे कोई नंबर्स लिखे हों, जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी. The key thing to understand is that the charges can come from the periodic table. Yeah, in other cases, हमें कुछ ना कुछ extra information given होती है जिसे हम ये ions लिख सकते हैं. You just need to focus on कि वो substance क्या है. All right, let's try for magnesium. So this one's going to dissolve. अब magnesium, I know it is in group 2, so I will say magnesium plus 2. Similarly, chloride, I know it's in group 7, so ये Cl minus होगा. And hydrogen as it is, because hydrogen gas है, ions नहीं बन रहे. Notice that this 2 doesn't matter for me right now, unless I want to balance it out, जो मैं बाद में करूँगा. But for now, it does not matter कि क्या उसका charge है. Now, the next thing will be कि whatever's on the both sides will be cancelled out. So I have chloride here, I have chloride here, I'll cancel it out. And now what do I have? I have magnesium plus H positive, making magnesium ion plus H2. I need 2 hydrogens, so यहाँ पे 2 आएगा, and it is balanced. So ये मेरी ionic equation है. इसी ionic equation को मैं half equations में भी distribute कर सकता हूँ. Half equation क्या होती है? That you just talk about one thing at a time. So for example, अगर मैं सिर्फ hydrogen को यहाँ पे लिखूं, तो मेरे पास यहाँ पे 2H positive है और इस साइड पे H2 है. Similarly, अगर मैं सिर्फ magnesium की बात करूं, तो मेरे पास magnesium है और इस साइड पे magnesium positive 2 है. Now let's try to figure out कि होता कैसे. How does hydrogen ion suddenly become hydrogen gas? So for that, you have to understand that these things are obviously because of electrons, flow of electrons. So H positive is positive 2 charge here, and over here there is 0 charge. So obviously इसको electrons मिले हैं. How many electrons? 2. Okay? Okay, so how exactly does this work? For that, let's see. H positive को मुझे 0 बनाना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे. I have 2 hydrogens, so 2 electrons देने पड़ेंगे. Similarly, 0 से positive 2 बनाना है. कैसे? By adding electrons here. And that is how we get these. That is how we get the oxidation figured out. अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इसकी reduction हुई है. It went from positive 1 to 0. और इसकी oxidation हुई है. It went from 0 to positive 2. And technically, this is displacement. Every displacement reaction is redox reaction. So this is how you make ionic equations. Ionic equations हमारे पास और solutions में भी हो सकती हैं. For example, अगर मेरे पास copper sulfate का कोई solution है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें zinc का rod एक dip कर देता हूँ.
That's all I've done. मैंने बस जिंक को डिप किया उसके अंदर. So here's what will happen. Because zinc is more reactive than copper, तो क्या होगा कि zinc will react with copper ion and displace it. So क्या होगा? Zn plus CuSO4 makes zinc sulfate plus copper. Displacement होगी. So हमें copper एक pink solid यहां पे बनता नजर आएगा और ये zinc जो है ये dissolve हो जाएगा. I have copper in the solution before the reaction happens, but afterwards I don't have copper in the solution. So the blue color of this copper ion that was over here, ये पूरा blue था, this blue color will now fade away. And eventually I'll get zinc sulfate solution, which is colorless. Now, how do I write the ionic equation for this? Again, I have to look for the charges. So 0, plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, 0. So let me write it. Zinc, states bhi mujhe chahiye. So this is aqueous, aqueous, solid, solid. So everything that is aqueous, I will ionize it. So copper ion, sulfate ion, zinc ion, sulfate ion, and copper metal. What is common in both sides? This sulfate, so I cancel it out. And now I'm left with zinc plus copper ion makes zinc ion plus copper metal. इनके colors आपको याद करने हैं. For that you have the fact sheet मैंने आपके साथ share करी हुई है. So you just remember that this will be blue and this will be pink. So the blue solution goes away and the pink solid is made. So that is displacement, that is ionic equation. Any questions so far? Please write the equation. Yeah, go on. Pucha Iman. Sir, I wanted to ask you, okay, you said that something dissolves over here. So can you tell what exactly dissolved over here and then why? So anything that is aqueous is technically dissolved. So zinc over here was solid, but because it was more reactive than copper, it was able to give electrons to copper. Any more reactive metal can give electrons to less reactive metal. और उससे क्या होगा कि जिंक अपने कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन्स देगा और कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी एंड जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी. So this is a pretty straightforward rule that any ion, any metal that is more reactive can give electrons to a less reactive ion. So zinc metal is able to give electrons to less reactive copper ion. We use it to make cells as well. So for example, if I had zinc here and copper here. So ये copper है और ये zinc है. And I just join them with a wire. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं किया है, और मैं यहाँ पे कोई एक्वा सॉल्यूशन कुछ भी रख देता हूँ, कॉपर सल्फेट या कुछ भी है, doesn't matter, sodium chloride solution, anything. Now what will happen is that this zinc, the gray solid, and this is the pink solid. So zinc, because it's more reactive, it will give electrons to copper. And it will dissolve. And that's a very interesting thing. We use it to make cells. In fact, अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा ना, तो मुझे एग्जैक्ट वोल्टेज भी पता चल जाएगी. By the way, people who study physics, if the electron is going from zinc to copper, how is the current going? What's the direction of current? Electrons, their flow is always opposite to the flow of charge, yeah, opposite to the flow of current. So current, yes, Ibrahim, you're absolutely right. Current is going in this direction. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताएं. अब ऑब्वियसली जिस जगह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो नेगेटिव होगी और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव होगी.
सो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो दैट इज अ बेसिक सेल. ठीक है, इस पे इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है. द ओनली थिंग वी नीड टू नो इज कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी. इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम अ मोर रिएक्टिव मेटल टू अ लेस रिएक्टिव मेटल, एंड देन समटाइम्स दे आस्क यू टू मेंशन कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस बताएं. दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल. डैनियल सेल भी इसका नाम है. So many names. Okay, now that we know cells, we know all of this. So let's get to the key topic for today. All right, does anybody know electrolysis kya hota hai? Electrolysis is breakdown of an electrolyte ya ionic compound using electricity. So basically decomposition hai. We take any ionic compound और हम उसको break down करते हैं दो चीजों. Kind of like purification technique, but chemistry को use करके. पहले हम फिल्ट्रेशन कर रहे थे, वो एक फिजिकल प्रोसेस था, तो हम उसमें दो चीजों को सेपरेट करते थे. अब हम दो चीजों को सेपरेट करेंगे यूजिंग केमिस्ट्री. सो काइंड ऑफ लाइक केमिकल फिल्ट्रेशन. ठीक है. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज एनी फ्लूइड. फ्लूइड का मतलब है कि वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो एक्वस हो सकता है, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो क्यों कंडक्ट करता है? Why does a liquid substance conduct electricity? Tell me. It has free moving ions. Very good. It has free moving ions, and those ions allow it to conduct electricity. Okay? Can you give me an example? So, pure water, will it conduct electricity? Yes. Pure water cannot conduct electricity because pure water does not have ions, or if it does, वो इतने थोड़े हैं कि उनसे कोई impact नहीं होता. So pure water does not conduct electricity. That's an interesting observation. Acha. I have ethanol. Will it conduct electricity? Covalent bonding है. It will not conduct electricity because उसमें free ions ही नहीं है. Okay, I have mercury. Good. Mercury does conduct electricity. In fact, mercury में electricity free electrons and free ions की वजह से होती है. उसमें positive ions भी होते हैं और उसके free electrons भी होते हैं. अच्छा, I have solid sodium chloride. Will it conduct electricity? It will not, because I don't have free ions. I do have ions, I just don't have them free at the moment. ठीक है? So हमारे पास ions होना जरूरी है, so that they can move around, or free electrons. But अगर कोई चीज free electrons के through बिजली conduct करे ना, तो उसका conduction is a physical process. But if anything uses free ions, then that is a physical process. Oh, sorry, chemical process, my bad. If anything uses ions to conduct electricity, that is a chemical process. All right? Okay, let's get started. So electrolysis में हमने क्या करना है? Here's the idea. We will take something that has this tank, because we need a liquid जो हमने इसमें add करना. This liquid is our electrolyte. इसमें positive ions हैं, इसमें negative ions हैं. They're moving around. I also have a battery. Does anybody recall battery की larger terminal कौन सा होता है? Positive या negative? Positive. Positive. Shabash. So this side is positive, this side is negative. Interestingly, I'm using DC. I'm not using AC. क्यों? क्योंकि मैं फिक्स करना चाहता हूं कि पॉजिटिव आयन किधर जाए और नेगेटिव आयन किधर जाए. आई डोंट वांट देम टू स्विच एवरी सिंगल टाइम. तो मैंने फिक्स करना है, मैंने डीसी बैटरी या डीसी सोर्स यूज करना है. नेक्स्ट, लेट्स ट्राई इट. आई विल डिप द वायर इन, बट द प्रॉब्लम विद द वायर इज कि वायर खुद भी रिएक्ट कर सकती है. सो मैं वायर की बजाय कोई ऐसी चीज रख लेता हूं जो कि शायद रिएक्ट ना करे. देयर विल बी सिचुएशन जहां पे मैं चाहता हूं कि रिएक्ट करे, बट अभी के लिए आज हमने मेनली नहीं देखना उसको. So two substances that don't usually react, they are graphite and platinum. These are the two that we use if we don't want it to
react. So ये हमारा graphite या platinum से ये दो rods dip कर दिए. These are called electrodes. अच्छा. Now the negative one is going to go towards the positive, and the positive ion is going to go towards the negative. Positive ion को कहते हैं cation. So cation जहां जाए उसको बोलते हैं cathode. So positive ion is cation, and wherever cation goes, that is cathode. Negative ion is anion, and wherever it goes, that's called anode. So cathode is where cation comes, and anode is where anion comes. वो आगे करेगा क्या? Here's what they want to do. They want to discharge. Discharge क्या है? Discharge is that anything becomes neutral. यानी अगर मेरे पास एल्यूमिनियम आयन होगा तो एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा. कैसे? हाउ डज एल्यूमिनियम बिकम एल्यूमिनियम मेटल? बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? यस. अच्छा, अगर मेरे पास सोडियम आयन होगा तो क्या करेगा? सोडियम मेटल बन जाएगा. कैसे? बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, मेरे पास क्लोराइड आयन है, क्लोरीन बनेगा तो न्यूट्रल होगा ना. कैसे? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? 2 क्यों? उसके पास तो एक है. बेसिकली देयर आर 2 क्लोरीन, सो ये 2 होगा, जिसका मतलब है दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. गेट इट? अच्छा, अब इसमें कुछ आयन्स अजीब से भी आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? इट विल चेंज टू 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन. Okay, that's what it will change to. All right, please note this equation down somewhere. Note कर लें इसको. So basically any ion that we have, it will go and become neutral. और उसके लिए अगर नेगेटिव है तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए में, वो लूज कर देगा. और अगर वो पॉजिटिव आयन हुआ तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसने लूज किए में, वो वापस ले लेगा. क्लियर एवरीवन? Now let's get started. Just identify this setup. Graphite will not react until, I don't know, around 900 डिग्री सेल्सियस तक वो रिएक्ट नहीं करता. 900 से ऊपर रिएक्शन जाए, टेम्परेचर होगा ना, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा, बट अभी के लिए नहीं करेगा. Okay, let's start. We are going to start with a very simple example of sodium chloride. So मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl. Will solid sodium chloride conduct electricity? No. No, it won't. So मुझे इसको मेल्ट करना पड़ेगा. If I melt it, will temperature rise? If I melt it, will temperature rise? Of course it will. I will have to melt it, which means कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा heat करना पड़ेगा. So if I have sodium chloride, I will have to melt it, and that will mean that I have to supply a lot of energy. So this will take a lot of energy and it will be an expensive process. Now I have electrolyte. ठीक है, मुझे बताएं what ions will I get? I have sodium chloride. What ions do I get? Na plus and Cl minus. Shabash. I will get Na plus and Cl minus. No other ions. Now here are 2 rules that I want you to remember when we are doing electrolysis. Reactive anode will ionize. Yeah, will form ions. Reactive anode, any anode that's not graphite or platinum. Copper होगा, copper ion बना देगा. Iron होगा, iron ion बन जाएंगे. Lead होगा, lead ion बन जाएंगे. Calcium होगा, calcium ions बन. ये हमारा first rule of electrolysis. Second, less reactive ion discharges
first, meaning if I have two negative ions, तो उनमें से पहले कौन सा करेगा? जो लेस रिएक्टिव होगा. जो मोर रिएक्टिव है वो नहीं करेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो पहले डिस्चार्ज होगा और दूसरा बाद में करेगा. So they kind of like have their turns. All right, any question, you just have to look at these rules. यहां पर मेरे पास है ग्रेफाइट. That means first rule तो apply नहीं होगा because graphite तो reactive है नहीं. So let's see what will happen at the anode, and then we will see what will happen at the cathode. So anode and cathode. All right. Between these two, which one will go to anode? Na Anode plus. is where anion goes. So Cl anion minus. hai chloride, Cl minus, yes. So Cl minus goes there, makes chlorine neutral. Discharge होना है ना, neutral बनाना है. So chlorine बन गया. How? By losing 2 electrons. क्यों? क्योंकि 2 क्लोराइड हैं, तो यहां पे 2 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा. What will sodium do? सोडियम ने भी डिस्चार्ज होना है, उसने न्यूट्रल सोडियम बनाना है. कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. डन, हो गया इलेक्ट्रोलिसिस. What will we get? We will get sodium metal and we will get chlorine gas. Does anybody recall the color of chlorine gas? Yellow green या खाली green भी आप कह सकते हैं. So there you go, हो गया discharge. अच्छा, sometimes examiner expect करता है कि हम एक overall equation दें, हम पूरे को balance करें. तो हम क्या करेंगे? हमने देखा कि this is giving 2 electrons. So इसको भी हम 2 कर देंगे. इसका मतलब है इस पूरी equation को 2 से multiply कर देंगे. And so what do we get? हम इस equation को लिखेंगे 2 chloride plus 2 sodium. इलेक्ट्रॉन दोनों साइड्स में, तो उसको नहीं लिखना. Makes 2 sodium plus 1 chlorine. And there you have it. We have made sodium chloride से simple sodium and chlorine. Done. Clear? Let's try one more. और ये आप करेंगे. So the electrolyte that we have is lead bromide. Liquid. Tell me, what ions do I have? What ions do I have? अब मैंने आपको बताया था कि चार्जेस का कैसे पता चलता है. ब्रोमाइड इज इन ग्रुप 7, सो पहले -1 इस पे आ गया, एंड देन द टोटल नेगेटिव चार्जेस 2 times -1, सो -2. उसको कैंसिल करने के लिए लेड विल हैव टू बी +2. ओके, सो आई हैव द 2 charges. All right, now I have lead 2 plus and bromide 1 negative. This number doesn't matter. क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड 1 हो, 2 हो, 10 हो, उसका फॉर्मूला Br माइनस ही है. ठीक है. अब will the first rule apply? First rule was the reactive anode ionizes or reactive anode forms ions. I don't have reactive anode, तो इस वजह से वो ions नहीं बनाएगा. ठीक है. Second rule was less है ही ब्रोमाइड एनोड के लिए, तो वही जाएगा. ब्रोमाइड जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन बनाएगा. कैसे? हाउ विल इट डू इट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी? 2. 2. Why 2? Because I have 2 of this, so this must be multiplied with 2, and that means कि 2 ब्रोमाइड होने की वजह से we have 2 electrons lose. All right, so that is how it is balanced out.
Cathode. What will happen there? The lead ion is going to go. So lead ion will become lead solid or lead metal. And that is neutral, so it will gain 2 electrons to do that. This lost 2 electrons, this gained 2 electrons, pretty balanced overall. So I will get lead ions reacting with 2 bromide ions. Electrons likhne ki zarurat nahi hai. Forming lead and bromine. What color is bromine? Red. What color is bromine? Red brown. Red brown. Very good. So that is what we will see. Because the temperature is high, we'll see it in gaseous form. So we'll say orange or red brown fumes. All right. Aasan hai na? Let's try one more. Now I have, again, same graphite here mere paas. I now have sodium chloride, but in aqueous form. What ions will I get? Obviously, sodium chloride is going to give me sodium ions, chloride ions, but water will also form ions and will give me H positive and OH negative ions. अब इसके लिए मुझे reactivity series चाहिए, because मुझे क्या पता less reactive कौन सा. So for that, I need the reactivity series, which is this. These are the important ones. Now the other one is this for the negative ions. But आपकी बुक में उसने OH को यहां लिखा हुआ है. हम उसको नहीं यूज करेंगे. We will write OH here. Another thing, कभी भी क्वेश्चन इन पे आता ही नहीं है. इन्होंने कभी डिस्चार्ज होना ही नहीं है हमारे सिलेबस में. सो टेक्निकली अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करना चाहूं ना, दिस इज ऑल आई नीड टू नो. दैट्स ऑल आई हैव. अगर ग्रुप 7 है, दैट इज लेस रिएक्टिव, ग्रुप 7 डिस्चार्ज करेगा. अगर OH है तो वो डिस्चार्ज करेगा. अगर ग्रुप 7 है, लेस रिएक्टिव है, डिस्चार्ज करेगा. लेस रिएक्टिव डिस्चार्ज, राइट? रूल नंबर 2. सो हमें ना इसकी जरूरत है ना इसकी, और इन सबको हम सिंप्लीफाई करके सिंपली ये याद कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट. इन द एनोड आई हैव दीज टू. कौन डिस्चार्ज करेगा? क्लोराइड, ग्रुप 7 है. सो क्लोराइड विल मेक क्लोरीन. कैसे? It will lose 2 electrons. And on the other side, I have hydrogen, because you can see hydrogen's over here. So hydrogen will hydrogen gas. Kaise? By gaining 2 electrons. I have no idea what's going on. Something's terribly wrong with the internet here. Sorry. So every time you have any gas as a product, you must mention its test. तो अगर हाइड्रोजन गैस आ रही होगी तो उसका टेस्ट क्या है? कि हाइड्रोजन is a gas that pops in a flame. तो आप लिखेंगे bubbles of a gas that pops in a flame. और अगर क्लोरीन आ रही होगी तो yellow green gas या green gas that bleaches litmus paper. All right.